This is a 23rd lecture. So in this lecture, we will discuss interest rate differential in little examples. This diagram we have done yesterday, if you remember. As a result of expansionary monetary policy or expansionary fiscal policy or strict trade policy in case of recession or trade deficits, local exchange rates, local real exchange rates, we see greater than the global real interest rate. Then we need to add interest rate differential, that is theta. जब local real interest rate global real interest rate से बढ़ जाता है due to any fiscal policy, due to expansionary or expansionary fiscal or monetary policy, due to expansionary fiscal or monetary policy, or in case of trade deficit, strict trade policy. In all cases, local real interest rate is greater than global real interest rate following the prior policy. So in both cases, in the session, when local real interest rate is greater than the global real interest rate, then we add interest rate differential to equate global real interest rate to local real interest rate. फिर दोबारा से लोकल रियल इंटरेस्ट रेट को ग्लोबल रियल इंटरेस्ट रेट के इक्वल करने के लिए ग्लोबल रियल इंटरेस्ट रेट में क्या ऐड करते हैं, थीटा. When this theta increases, which one we add to remove the risk? When we add this theta, what happened to the economy? Then, exactly in both cases, IS curve and LM curve, in case of fiscal policy and in case of monetary policy, real interest rate increases. In case of IS curve, investment decreases. And in case of monetary policy, money demand decreases. That is movement along the money demand curve. As interest rate increases, money demand decreases. Downward sloping money demand curve. Then we find the outcomes at new equilibrium, exchange rate decreases and income level increases. Then the question is, how income level increases? This is the question. Wait for 1 minute. I will tell you this thing later. Okay. So, as interest rate differential increases, both IS curve shift left, LM curve shift right. Now we are going to in little detailed discussion. Okay. The fall in exchange rate, exchange rate decreases. As exchange rate decreases, that is very intuitive. That is very interesting. That is this thing, falling exchange rate gives us very interesting outcome. As exchange rate decreases, बेटा जब exchange rate decreases होता है, then currency क्या होती है, depreciate. Decreasing exchange rate का मीनिंग क्या है?
डिक्रीजिंग एक्सचेंज रेट के मीनिंग क्या है कि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है. सो एज करेंसी वैल्यू डिक्रीजेस देन रिस्क इंक्रीज. Thus, this unexpected, this one is this expected depreciation due to increase in differential. This expected depreciation makes holding the country currency less effective. जब करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, थीटा के इंक्रीज होने से जब करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी देन आपके लिए वो करेंसी लेस अट्रैक्टिव हो जाएगी, अट्रैक्टिव नहीं रहेगी. आज पाकिस्तान में चाहे हम पाकिस्तानी हैं लेकिन सभी लोग प्रेफर करते हैं उनके पास डॉलर हो. डॉलर क्यों आप प्रेफर करते हैं? क्योंकि डॉलर अट्रैक्टिव है, उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू रुपीज. So this expected depreciation is self-fulfilling prophecy. So this depreciation creates a risk for the country borrowers. अब पाकिस्तान ने बेटा बोरो किया हुआ है IMF से, जैसे ही एक्सचेंज रेट की वैल्यू कम होगी उसका इम्पैक्ट क्या होगा? पाकिस्तान का डेट बढ़ जाएगा इन टर्म ऑफ रुपीज, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू कम है. एज करेंसी डेप्रिशिएट वी फाइंड टू आउटकम्स. एज अ रिजल्ट, एंड यू नो वी फाइंड दैट exchange rate decreases and income level increases. We find higher income level, we find an increase in income level because the boost in net export. That is resulting from depreciation. जैसे ही एक्सचेंज रेट कम होता है बेटा, एक्सचेंज रेट के कम होने का इम्पैक्ट क्या होता है? एक्सचेंज रेट के कम होने का इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, इंपोर्ट कम हो जाती है, क्योंकि इंपोर्ट आपकी एक्सपेंसिव हो जाती है. एज अ रिजल्ट नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाती है. जब नेट एक्सपोर्ट आपकी बढ़ती है, नेट एक्सपोर्ट के बढ़ने से आपकी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाती है. ठीक है भैया? एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होता है? आपका इनकम लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है. तो नेट एक्सपोर्ट के बढ़ने से आपका इनकम लेवल बढ़ जाता है. सो दिस इंक्रीमेंट इन इनकम लेवल इज ग्रेटर देन द फॉल इन इन्वेस्टमेंट. आपको याद होगा कि जैसे ही थीटा इंक्रीज हुआ था इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी. नेट एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों किसके कंपोनेंट हैं? आपके इनकम के कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है आपके. नेट एक्सपोर्ट आपका कम बढ़ रहा है due to increase, due to depreciation, due to currency depreciation, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो रही है. So this increase in net export is greater than the fall in investment. कि जो नेट एक्सपोर्ट बढ़ रही है वो ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट. एक तरफ नेट एक्सपोर्ट बढ़ रही है और इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, लेकिन जो चीज बढ़ रही है नेट एक्सपोर्ट जो बढ़ रही है वो इन्वेस्टमेंट के फॉल होने से ज्यादा है. एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इनकम लेवल कम हुआ था वो इनकम लेवल कम नहीं होगा, वो नेट एक्सपोर्ट के बढ़ने की वजह से बढ़ जाएगा. So this is the reason for increase in income level in Mandal framing model. Now we are going to next. Hopefully you understand everything. How decrease in exchange rate causes to increase in income level. Now the second thing, why income might not rise. Here, central bank task is to control depreciation. सेंट्रल बैंक का काम क्या है? डेप्रिसिएशन को स्टॉप करना. अब सेंट्रल बैंक डेप्रिसिएशन कैसे कम कर सकता है? बाय
reducing money supply. By reducing money supply. As money supply reduces, depreciation is going to be controlled. जैसे ही मनी सप्लाई रिड्यूस करते हैं आपका एलएम कर्व लेफ्ट हो जाता है. The income level might not rise. जो इनकम लेवल बढ़ा था ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो ना बढ़े. ये किस केस में होता है कि जब स्टेट बैंक एक्सचेंज रेट को फिक्स करना चाहता है. अब करेंसी में जो डेप्रिसिएशन हुई है इसकी रीजन क्या है? डेप्रिसिएशन करेंसी की डेप्रिसिएट होने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपका एक्सचेंज रेट क्या है? फ्लोटिंग है. और जो की रीजन है वो क्या है? वो थीटा है. द इंक्रीज इन डिफरेंशियल है. डिफरेंशियल का बढ़ जाना है. फाइनली अब स्टेट बैंक डेप्रिसिएशन को कैसे कंट्रोल करेगा? बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई. As state bank reduces money supply, as state bank reduces money supply, then LM curve shift leftward. जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा जो इनकम लेवल बढ़ा था वो पॉसिबल ना बढ़े. Okay, so this depreciation might boost the price of the imports. जब depreciation होगा तो definitely price level import का price level बढ़ जाएगा. That ultimately will increase the price level. Okay. Now consumers might respond to the increased risk by holding more money. As money supply decreases, LM shift leftward, and as money supply decreases, interest rate decreases. जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है then consumer prefer to hold more money. दोबारा से एक्सप्लेन करता चलो. एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए स्टेट बैंक की पॉलिसी क्या है? वो मनी सप्लाई को बंद कर देता है डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करने के लिए. जो शॉर्ट रन में डेप्रिसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन थीटा. जैसे ही मनी सप्लाई रिड्यूस होती है, मनी सप्लाई के रिड्यूस होने का इम्पैक्ट क्या होगा? एलएम कर्व आपके लेफ्ट शिफ्ट होगा. जैसे ही मनी सप्लाई कम होगी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा. एलएम कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड. देन कंज्यूमर विल प्रेफर टू होल्ड मनी. उनके मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है. अब उनकी प्रेफरेंस क्या होगी कंज्यूमर की कि वो कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाएं बल्कि होल्ड करें. So in this way, LM curve shift leftward and income level might not rise. The rightward shift होने से जो income level बढ़ गया था हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं. LM curve shift होने से देखो ना LM curve shift हुआ. आप इसी की पे आ गए. Where LM curve with red color and IS curve with red color intersect at this point. अब अगर स्टेट बैंक फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो करता है टू कंट्रोल डेप्रिसिएशन, टू कंट्रोल रिडक्शन इन एक्सचेंज रेट, देन स्टेट बैंक क्या करेगा? विल रिड्यूस मनी सप्लाई. एज मनी सप्लाई रिड्यूसेस, interest rate reduces, LM curve shifts leftward to LM1, and we are here at new equilibrium point. LM curve shifts back, and we are here again. We are here. The new equilibrium point will be at this point. अब
स्टेट बैंक की विश क्या थी कि एक्सचेंज रेट को कंट्रोल किया जाए, लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन कुछ न कुछ काम में कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि एक्सचेंज रेट को उन्होंने शुरू से फिक्स नहीं लिया होगा। लेकिन इनकम लेवल अब माइट नॉट राइज, इनकम लेवल इनकम लेवल क्यों चेंज होगी जब LM2 LM1 की तरफ बैक शिफ्ट होगा, देन LM1 will intersect at IS2 where no change in income level. पॉसिबल है कि इनकम लेवल चेंज ना हो जब स्टेट बैंक क्या होगा, डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई कम कर देगा। एज अ रिजल्ट डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, लेकिन इनकम लेवल में कोई चेंज नहीं रहेगी। दिस इज द स्टेट बैंक पॉलिसी टू कंट्रोल दिस बिग स्पेस ऑफ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन कंट्रोल हो जाएगी यहाँ पे और इनकम लेवल में कोई चेंज नहीं होगी। दिस इज द स्टेट बैंक पॉलिसी टू कंट्रोल द स्टेट बैंक। ओके, नाउ this is diagram. This diagram shows Mexico crisis over the time. In time of Mexico crisis, when Mexico was in crisis, then imports definitely, in case of crisis, in case of recession, mostly countries follow expansive monetary or expansionary or a strict trade policy. In all cases, what happened to the economy? Imports become expensive. So similarly, US and Mexico are neighboring countries like India and Pakistan. So in case of recession in Mexico, US goods were more expensive to Mexicians. In this case, जब यूएस प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ गई, इंपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ गई मेक्सिको में रिसेशंस में, then US firm lost its revenue, their revenues. Their banks were bankruptcy, hundreds of bankruptcies along US-Mexico borders. Banks both are default of it. And Mexican assets got less in dollars because Mexican assets were less in dollars because Mexican currency was depreciated. जब करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, फिर करेंसी की एसेट की वैल्यू भी कम हो जाती है, और एसेट की वैल्यू का नुकसान किसको हुआ? यूएस को भी हुआ, क्योंकि बहुत सारे यूएस सिटीजन जो थे उनकी वेल्थ थी मेक्सिको में थी, तो करेंसी की वैल्यू कम होने से तो डेप्रिसिएशन इन मेक्सिको reduce wealth of millions of dollars of US citizens. This is the history of Mexicians. So in the early 1990s, Mexico was very attractive for investors, even for US invested a big amount of dollars in Mexico. But during 1994, political developments caused an increase in Mexico risk premiums. Political developments caused to increase risk premium to equate local interest rate to global interest rates. In the process of development, they use expansive fiscal or monetary policy for development. It caused local real interest rates to be greater than the global interest rate.
So this development caused an increase in risk premium. So they increased risk premium to equate local real interest rate to local real interest rate. As a result, recent uprising in Chiapas. As a result, मेक्सिको की करेंसी की वैल्यू फाइनली मेक्सिको के एसेट्स की वैल्यू विद इन कंट्रीज मैक्सिशियंस की और यूएस सिटीजन की जो उसकी ऑनर की वैल्यू so this is the crisis caused to increase theta. As a result, we find further crisis in Mexico. Getting the point? So that is okay for you. No need to go in further detail. That is the other detail. So here, I know I want to close our lecture. That is okay for you. Chinese currency control. Okay. So this is the case studies. This is ISLM curve framework. Derivation of aggregate demand. Maybe we will do this in the next class. Then I will close everything till the next class. Is okay. Now I think it's okay everything. So now I stop our lecture. We stop our lecture at this point, and we will